वंदेहं श्री गुरु श्री युगपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं सजीवं सावधूतं सावधूतं पंचदशैकं कृष्णदेवं श्री राधा कृष्ण पादां श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य Yes. Okay. We will again go back to for a few minutes. We will again go back to 5 basic truths of Bhagavad Gita. This is basically your para number 12, 13. I think you have left space for paragraph number 10 and 11. Space छोड़ा हुआ है इसमें. So paragraph number 12, 13 and 14. Once again we will make this with a better understanding now. Are you all reading side by side? You know, this introduction of Bhagavad Gita, this practically covers all the concepts of Bhagavad Gita. There is no concept in touch here. सारे important concepts हैं जो भगवद गीता के वो पूरी तरह से कवर हो गए हैं. कहाँ पर कवर हो गए? सिर्फ और सिर्फ किसमें? इंट्रोडक्शन में So 12, 13 और 14 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ्स को कवर करते हैं. कॉमन चार्ट बनाएंगे. ओके. So the topmost is ये फ्रेश पेज पे आप लोग बनाना, क्योंकि ये ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. इसको हम जितना अच्छा समझें उतना अच्छा.
The topmost is what? Ishvara. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadi Govinda Sarvakaran Karana. Ishvara is the supreme controller. ये पूरा fresh page पे ना थोड़ा sequence में बनाना. So it is stated in Brahma Samhita 1 also. And भगवद गीता में तो बहुत श्लोक है, but उनमें से prominent श्लोक है कौन सा? 10.8. क्या था 10.8 भगवद गीता में? अगर हम देखते हैं भगवद गीता 10.8, this is अहम सर्वस्व प्रभो अहम सर्वस्व मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विताः. And the source of all spiritual and material worlds. Even Srimad Bhagavatam also, okay. Everything emanates from me. The wise, who perfectly knows this, engage in my devotional service and worship me with all their hearts. And worship me with all their. यहाँ पे भी है. यदि आप देखें श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम का भी फर्स्ट श्लोक ही क्या है? बिल्कुल फर्स्ट श्लोक, फर्स्ट कैंटो. What? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. It starts with Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I offer my obeisances to Vasudev, the son of Vasudev. Specifically mentioned Om Namo Bhagavate Ishwar, ऐसा कुछ नहीं लिखा. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. That Vasudeva is Bhagavate. Vasudeva is Bhagavate. Bhagavan is स्वयं. इतने श्लोक है पर कहीं और एक चीज क्लेम नहीं है. What does it say? जन्मादि अस्यायतो. What does this mean? जन्मादि अस्यायतो. Of the creation, maintenance and destruction. He is responsible. Who is responsible? Vasudevaya. Like therefore I am. So janmadi anvayad itaratascha artheshu abhigya. Anvayad directly, itaratascha indirectly. Artheshu abhigya, he is fully cognizant. सब पता उनको, directly और indirectly भगवान को सब पता है, जितने manifestations है उसके बारे में. Swarat. Swarat means he is fully independent. It doesn't depend on anyone. क्या क्या features ये जो first श्लोक है ना, ये भगवान की definition है. श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है, ये भगवान की definition है. याद करो मेरे साथ. जन्मादि अस्या यतः, मतलब he is responsible for creation. जन्मादि creation, जन्मादि अस्या maintenance, यतः destruction. जन्मादि अस्या यतः अन्वयाद directly, iteratus indirectly, cha artheshu abhigya is directly, indirectly, fully aware of all manifestations. Swarat, fully independent. Tene brahma hridaya adi kavaye, fourth feature of God. Kya? Tene brahma hridaya adi kavaye. That you have imparted, Vasudev, you have imparted the entire knowledge to the heart of Brahma, the Vedic knowledge. Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye Muyanti Yata Surya Tejavari Mridam Yatha. Muyanti Yata Surya. You can put in illusion. Muyanti. Yata Surya. Surya means your the sages, the demigods. Muyanti, illusion. You can put in illusion. What to talk of me? You can put in illusion the demigods, sages. Muyanti yata surya tejavari mritam yata vinimayo. Like if you see, sometimes you see that water is there on the land. Sometimes you see जब आग जल रही होती है ऊपर दो वाटर अलग फुट रहा होता है, ऐसा लगता है पानी. Tejo fire, vari water, mridam, like you see, vari was water only. Yes, water. Mridam, earth, like you see that on the land you see water is spread.
On the fire you see water is spread like that. So it is illusion. Tejo vari muyanti yat surya. You put in illusion the demigods. The way we are put in illusion when we see that at a far distance water is spread. Yatra tresargo amrishaha. Because of you, this material world, which is formed out of Rajoguna, Satoguna, Tamoguna. Because of you, Yatra tresargo amrisha. Because of you, it appears to be truth, although it is unreal. It is not truth, it is unreal. Dhamna svena sada nirasta kuhukam. Dhamna svena, that your abode, O Vasudev, your Goloka Vrindavan, svena sada nirasta kuhukam. It is free from all kind of illusions. No illusions are there. Kuhukam means illusion. No illusions are there in your world. Satyam Parama Dhimahi, that you are the real truth, absolute truth. Satyam Parama, only you are the topmost. Dhimahi, I meditate upon you. Dhimahi means I meditate. So 7 reasons here. Who's giving? Vyasadeva, that why Krishna is supreme. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. He is the cause of, come on, memorize with me. He is the cause of creation, maintenance, destruction. Then he is directly, indirectly, fully cognizant about all manifestations. सब कुछ पता उनको क्या कहाँ पर है. Then Abhigya is done. Swarat, he is fully independent. Then Tena Brahma Hridaya Adikave, fourth, you have given the knowledge to the heart of Brahma. Muyanti yatasarya tejo vari mritam. As we see land on water, water on land. Similarly, you put in illusion big demigods. How many done? 5. Memorize. Come on. You are responsible for creation, maintenance, destruction. Second, you are fully cognizant of all manifestations. Sab pata aapko. Third, you are fully independent. Swarat. Fourth, you have imparted the knowledge to the heart of Brahma. Fifth, you put in illusion, great sages and demigods, like water seen on land. 5 done. 6, because of you, this material world, although it is unreal, but it appears to be factual. It appears to be real. Yatra tri sargo. It is created out of Satoguna. 3. Satoguna, Rajoguna and Tamoguna. It appears to be true, factual. How many done? 6. Last. Dhamna Svena Sada. It is on Dhamna Svena Sada Nirastakokam. Only your abode. Dhamna, your Dham. Only your abode is free from illusion, is free from Kuhukam. How many done? 7. That is why Satyam Parama Dhimahi, I meditate upon you. This is the reason why I meditate upon you. You are supreme. You understand? What are the 7 reasons? Come on. Can someone repeat all the 7? Who all can repeat all the 7? Satyam, why Satyam Param Dhimahi to Krishna? 7, all the 7. Who can repeat? Only 3 devotees. 4. Okay, first. Prabhuji is the cause of Creation, maintenance, destruction. Second. Is aware of all the manifestations. Fully aware, cognizant of all the manifestation. Third, is fully independent. Fourth, He imparted knowledge to the heart of Brahma. Fifth, Fifth, He is the one who puts the illusion on the all the great sages and demigods, like water seen on land. Sixth, knowledge is half of the tell me in sequence. Sixth, Satogun, Rajogun, Tamogun से बना हुआ जो material world है factual लगता है. यत्र त्रि सर्गो अमरेश. Seventh, your world, your spiritual world is free from illusion. Satyam Param, I meditate upon you. Come on, once again, all the 7. Memorize this. This is our principal shlok. Very important. वैष्णवों के लिए ये बेस है,
ये वाला श्लोक जो, why? This is the definition of Krishna. This is definition of absolute truth, definition of Bhagavan. Come on, 7 points. First, you are responsible for creation, maintenance, destruction. Second, you are fully cognizant about all the material manifestations and spiritual manifestations. Third, you are fully independent. Fourth, you imparted knowledge to the heart of Brahma. Fifth, you put in illusion the great sages and the demigods. Sixth, the material world made out of the 3 gunas. It appears to be factual because of you. Seventh, your abode is free from all illusions. So you can also write Srimad Bhagavatam 1.1.1. So the first truth, the first basic truth of Bhagavad Gita is Ishvara. Now who is Ishvara? It is there in Brahma Samhita first shloka. It is Bhagavad Gita में many shlokas. I'm just talking about one. In Srimad Bhagavatam first shloka, very clearly it says. Shall we go back to Srimad Bhagavatam once for a minute? What further it says? First 3 shlokas are very important of Srimad Bhagavatam. What does it say? Second text. Dharma projito katavudra paramo nirmatsaranam satam vedyam vasavam atra vastu shivadam tapa trayomolanam Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kim va parer Ishvaraha Sadayo Hridi Avarudhyate Atra Kritibhi Shushrubhish Tat Chana. What does it say? Completely rejecting Dharma Purojito Kaitavo. Completely rejecting all religious activities. Reject everything. Srimad Bhagavatam. You have understood Shruti Shastra and Smriti Shastra. This is Smriti Shastra. This is written after 17 Puranas. This is the 18th Purana. Vyasadeva was dissatisfied. Shruti Shastra में क्या क्या था? वेद, उपवेद और देवान वंश. वेद, उपवेद और देवान वंश. वो हमारे लिए इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं. स्मृति शास्त्र में क्या क्या था? तंत्र विद्या, then इतिहास, then तंत्र विद्या, पंचरात्र, इतिहास, and 18 Purana, 17 Purana. Then Vyasadeva, after writing so much, dissatisfied. After writing 17 Puranas, dissatisfied. Then he wrote 18th Purana. In 18th Purana, that is Srimad Bhagavatam, Vyasadeva himself is dissatisfied after writing the 17 Purana, Shiv Purana, Devi Purana, Vara Purana, Singh Purana, all Puranas. Vyasadeva is dissatisfied after it. How can that Puran give you satisfaction? How can Vedas give you satisfaction? And Vyasadeva is himself dissatisfied. Then he wrote on the instructions of Narad Muni, he wrote what? Srimad Bhagavatam. And Srimad Bhagavatam starts from Om Namo Bhagavate Vasudevaya, because Narad Muni says to Vyasadeva, you are dissatisfied because you have not given the pure devotional service anywhere. And then in the first slok he says what? The definition of Bhagwan. In the second slok, everyone is comfortable in English. In the second slok he says, completely rejecting all religious activities. मैंने जो अभी तक 17 पुराण लिखे सब reject कर दो. Completely rejecting all religious activities which are materially motivated. If you do this, you get this. This Bhagavad Puran propounds the highest truth. In none of the Purans he said that this is the highest truth. But in Bhagavad Puran he said this propounds the highest truth which is understandable by those devotees who are fully pure in the heart. The highest truth is reality distinguished from the illusion for welfare of all. Such truth uproots the threefold miseries. Can someone tell me what is threefold miseries? तीन तरह के क्लेश खत्म. कौन से? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक. तीनों क्लेश. What is आदि भौतिक? The miseries due to
own mind, खुद के वजह से. What is adi devik? The misery is due to natural calamities by devatas. And what is adhyatmic? What is adi bhautik? The misery is due to others. What is adi devik? The misery is due to demigods. And what is adhyatmic? The misery is due to own mind and body. Such truth uproots the threefold miseries. This Bhagavatam uproots the threefold miseries. This beautiful Bhagavatam compiled by the great sage Vyasadeva is sufficient in itself for God realization. कहीं इधर उधर मुंह मारने की आवश्यकता नहीं है. Sufficient है God realization के लिए. What is the need for any other scripture? A person who is writing itihas, person who is writing tantra vidya, person who is writing pancharatra, person who is writing 17 Purans, this person, the same person is writing 18th Puran in which he is writing there is no need of other scriptures. And yet people run after other scriptures. मतलब वहां पे जो लिखा वो ज्यादा सच लिखा है ऐसे देखो. अगर किसी को एक्सेप्ट करना है तो टोटलिटी में एक्सेप्ट करना कि मेरे को हिमनेश प्रभु की 4 बातें अच्छी लगती है, 2 बुरी लगती है, बस अब हिमनेश प्रभु 2 बुरी बातों के लिए पूरे बन. How do you accept a person in totality? No? You see that there are 5 good qualities, 1 negative quality. Okay, I accept it. That is a true person. Similarly, Vyasadeva also says there is no need of. In other scriptures, maybe in Shiv Puran, Vyasadeva is saying Shiv is supreme. Let's say it is there. But here also Vyasadeva is saying, what is the need of any other scripture? वो accept कर लोगे क्योंकि शिव जी का पूजा करके सुंदर स्त्री मिलती है, धन मिलता है, वो एक्सेप्ट कर लो. ये नहीं एक्सेप्ट करो. What is the need of any other scripture? As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, very important. As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within the heart. He is established. So you are ready to accept His message. What is the condition? Attentively and submissively hear the message of Srimad Bhagavatam. What is the next? These 3 principal shlokas is very important. What is the next one? Third one, no? Nigam kalpataror galitam phalam shuka mukhar amrita drava samyitam pibata bhagavatam rasam alyam mohur avorasika bhuvi bhavukaha. What does it say? O expert, relish the Srimad Bhagavatam, the mature fruit of desired tree of Vedic literature. Mature fruit of the desired tree. ये वैदिक लिटरेचर एक पूरा पेड़ के समान है. इसका सबसे ज्यादा फलम गलितम मेच्योर फ्रूट क्या है? श्रीमद् भागवत. मीठा फ्रूट ही खाओ कि कच्चा फ्रूट तोड़ के खा लोगे? तो बाकी के 17 पुराण सक्सेसिव है. यहीं से प्रूव होता है कि जो बाकी के 17 पुराण है वो सक्सेसिवली अभी मेच्योरिटी के स्टेज की तरफ जा रहे हैं. पहुंचते पहुंचते 18वें पे जाकर कंप्लीट मेच्योर स्टेज. फलम गलितम. It emanated from the lips of Sri Sukdev Goswami. सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था किसको? परीक्षित महाराज. परीक्षित महाराज कौन है? अर्जुन के पोते. Therefore, this fruit has become even more tasteful. Okay, why it has become, एक पेड़ के ऊपर सबसे ज्यादा मीठा फ्रूट कौन सा होता है जिसको कौन अपना बीक लगा दे? पैरेट. और सुखदेव गोस्वामी कौन है? स्वयं राधा रानी के पैरेट. सुखदेव. तो पहले ही ये श्रीमद् भागवतम स्वीट है, फलम गलितम. अब इसमें मुंह किसने लगा दिया? सुखदेव गोस्वामी ने लगा दिया, क्योंकि सबसे पहले इसको सुखदेव गोस्वामी ने ही टेस्ट किया. सुखदेव गोस्वामी कौन है? व्यासदेव के बेटे जिन्होंने सारा कुछ लिखा. परीक्षित महाराज कौन है? पांडवों के वंशज. अब सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव के बेटे वो किसको सुना रहे? परीक्षित महाराज को. सबसे पहले टेस्ट किसने कर लिया? सुखदेव गोस्वामी. पैरेट ने टेस्ट कर लिया, इसलिए फ्रूट और भी स्वीट हो गया. Therefore, the fruit has become even more tasteful. Although it is nectarian juice, its nectarian juice was already relishable for all. पहले ये बहुत मीठा था. अब क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने अपने बीक से टच कर लिया,
or sweet over. These are the three principal shlokas of Srimad Bhagavatam. What does the first slok says? Definition of knowledge. What does second shloka says? Completely reject everything. And what does the third slok says? This is the ripened fruit of Vedas. Understand? So, if I talk about the five basic truths of Bhagavad Gita, Ishvara, the supreme controller. So you can go through Brahma Samhita first slok, Bhagavad Gita 10.8, Srimad Bhagavatam 1.1.1. Okay, from Ishwar. So we are getting a deeper understanding into the five basic truths of the Bhagavad Gita. Okay, here I will write Jeev. Jeev. Jeev can be the devotee or a, okay, Jeev can be a non-devotee or a devotee. That is his free will. That is his free will. All right. So Jeev can be a devotee. मानिक प्रभु तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, रेस्ट करो. अब थोड़ा देर अंदर रेस्ट कर लो, तो मेडिसिन का कुछ करता हूँ क्लास खत्म. अभी घर जाना है. Jeev. All right. So there are two types: non-devotee and devotees. The Jeev is the superior Prakriti. Superior Prakriti. Where is it described? It is in 7.5. Bhagavad Gita 7. पढ़ेंगे अभी इसको. The Jeev is the superior Prakriti. Then there is material nature. Material nature. This material nature is the inferior Prakriti. You know what is material nature? Earth, fire, air, water, ether. Ether is like sky. Understand? Sky. You can say. It carries the sound. Air does not carry the sound. There is a component in air called ether that carries the sound. Now, this material nature the controller of this material nature is who is the controller? Durga.
inferior prakriti की controller है Durga, वो inferior नहीं है. You understand? Sometimes Durga is also addressed as prakriti. Right? You understand? Durga is also addressed as prakriti. And the controller of the material nature, that is inferior prakriti, is Durga. And the superior prakriti is Jeev. क्या दुर्गा फिर inferior बन गई जीव से? Durga is not inferior prakriti. Durga is the controller, in charge. Oh, that is a better word. Not controller. What is the better word? In charge. In charge. Now this Durga, or this prakriti, has three subparts. Satogun, Rajogun, and Tamogun. So in case of non-devotees, there is an influence of three modes. You understand? There's a more deeper understanding to what we did in the last class. Of this Durga, there are three expansions: Satogun, Rajogun, Tamogun. And these Tamogun influence on the influence of the three modes, who acts as a non-devotee. And on the influence of three modes, this non-devotee does two things. What is that? Karma and vikarma. Karma is called basically business. Sakam karma. Karma is basically, what is sakam karma? I do good, I get good. And what is vikarma? This is breaking the four regulative principles. That is vikarma. You understand? So Jiva is superior prakriti, and the material nature, which consists of five elements, it is the inferior prakriti. Plus, what else is there? These are the five gross elements. What are the three subtle elements? Mind, ego, intelligence. मन, बुद्धि और अहंकार जो हमारे में है. This is what subtle elements. Okay, मुझे बताओ कितने basic truths cover हो गए इसमें? कितने basic truths थे total? What were the five basic truths? Come on. Ishvara, then Jeev, then Prakriti, then Karma, and then Kal. यही थे. क्या क्या कवर कर लिया हमने बताओ इस चार्ट में? ईश्वर, जीव और प्रकृति. जीव is also प्रकृति. Which prakriti? Superior prakriti. You understand? No problem. यहां तक समझ आता है बिल्कुल? A devotee, he works in the influence of, there is influence of Ishvara, not modes. Influence of Ishvara. In influence of Ishvara, what does he do? What does he do? Akarma is neither papa nor punya. This akarma doesn't bind. Doesn't bind. बांधता नहीं है.
ये sakam karma is basically punya, pious. You can say pious and impious. चाहे pious हो चाहे impious हो, ये दोनों ही हमें bind करते हैं. किससे bind करते हैं? To the material world. You understand? No confusions? So under the influence of Satogun, Rajogun and Tamogun, the non-devotee basically desires for the material nature. Earth, water, air, fire, ether, mind, ego, intelligence. Under the influence of three modes, he does karma and vikarma. This karma and vikarma is basically there is a desire for material nature. So if you are an influence of Durga, then you will have desire for material nature. But if you are an influence of Ishvara, then you don't want anything that will bind you to the material world. You will do akarma. You understand? Now, Ishvara, like it controls the Jiva, the devotees. See, in case of devotee, there is a direct route. The Ishvara directly influence the devotee. But in case of non-devotee, there is Ishvara again is controlling, but through a direct route or indirect route. Firstly, it will go to Durga, then the file will go to the non-devotee, like that. And in Bhagavad Gita 3.10, it says, what? That Durga is also controlled by whom? Maya Dakshena Prakriti. What was it? 9.10, I'm sorry. Maya Dakshena Prakriti. Any confusion till here? तो अभी तक मैंने भगवत गीता के कौन कौन से श्लोकास मेंशन करे? 10.8 मैंने रीड करवा दिया था. अहम सर्वस्व प्रभु करवा दिया था ना? That what did it say? Aham sarvasva prabhu. That let us go back. कुशाग्र समझ आ रहा है क्या चल रहा है? हाँ जी प्रभुजी, थोड़ा थोड़ा आ रहा है. I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. Superior prakriti also and inferior prakriti also. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with their hearts. This is 10.8. Then next slok is 9.10. If I see 9.10, what does it say? It says, Maya Dakshena Prakriti Suyate Sacharacharam Hetu Nane Nakonteya Jagat Vipari Vartate. The material nature, which is one of my energies, is working under my direction. So Durga is working under the direction of Ishvara. O son of Kunti, producing all the moving and non-moving beings under its rule. This manifestation is created, annihilated again and again under the rule of Durga. But is Durga independent? No. Okay, Maya Dakshena Prakriti. Then comes, when I tell you about the superior Prakriti and inferior Prakriti, that is specified in 7.5. Apareyam itas tva anya prakritim vidhi me param jiva bhutam mahabaho yedam dharyate jagat. Besides these, just read this 7.5. Besides these, O mighty armed Arjun, there is another superior energy of mine, which comprises the living entities. So living entities are superior energy or inferior? Superior. Superior Prakriti. Who are exploiting the resources of
material, which is inferior nature. There is a support for everything. So where is it written that the material nature is inferior? 7.5. Where is it written that the jiva? Does it make Durga inferior? Durga is the in charge of the material nature. You understand? We have support of everything in Bhagavad Gita, if I talk. So I have discussed fully about Ishvara. I have discussed fully about Jiva. I have discussed fully about Prakriti, superior Prakriti, inferior Prakriti. I have discussed fully about Karma ke three parts: Karma, Vikarma, Akarma. Now what is left is Kal. So if I see Kal, Kal, what does it do to a non-devotee? If I see Kal, चार्ट कम कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा? समझ आ रहा है? अपनी सिचुएशन समझ आ रही है? सो काल, काल Kaal is in 11.32. Let us see what does 11.32 says. Correct? दोनों का हश्र बता देगा, डिवोटी का भी, नॉन डिवोटी. भगवद गीता 11.32. श्री भगवान उवाच कालो अस्मि लोकशय प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवर्तता ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वष्टिता प्रति अनिकेषु योद्धः. The Supreme Personality of Godhead, Kalo Asmi, Lokashaya. Time I am, the destroyer of the three worlds, of all the worlds, Lokashaya. And I have come here to destroy all people. I will destroy all the non-devotees, with the exception of you Pandavas. So Kal means death for non-devotees, but it means life for devotees. So if I see, for non-devotees, Kal brings what? Destruction. Here, what does destruction mean? Prabhupada explains in the purport. Kal brings destruction, that is animalistic life. Adogati. This is there in 11.32. But for a devotee, Kal brings destruction or life. Okay. ये 11.32 में है clearly, with the exception of you, O Pandavas. Again, what is it? Supreme Personality of Godhead said, time I am the destroyer of the three worlds. And I have come here to destroy all people, with the exception of you, the Pandavas. All the soldiers here on both sides will be slain. सब मर जाएंगे. सिर्फ पांडव बचेंगे. So how does Kal brings life for devotees? That is specified in 3 shlokas. We discussed them in last class. It was Bhagavad Gita 2.40. What does 2.40 say, shall we see? Neha vikarma नाशस्ते प्रत्यवायुना विद्यते स्वल्पम अस्यापि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. What does it say? 2.40. Translation.
In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement of this path can protect one from the most dangerous type of fear, that you will not become an animal. That is the dangerous fear. Hmm. So, what does Kal bring for a devotee is life. So, what does Bhagavad Gita 2.40 says? Krishna protects from greatest fear, not death. After death is the greatest fear, that you don't become an animal. Then, how does it brings life? Is Bhagavad Gita 9.31. What is there in 9.31? कौन्तेय प्रतिजानाति, यही वाला श्लोक था शायद 9.31, यही था ना? Yes. क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं न गच्छति कौन्तेय प्रतिजानाति नाम भक्त्या प्रणश्यति. He quickly becomes righteous and attains lasting peace, O son of Kunti. Declare it boldly that my devotee never perishes. Again, he gets life. He doesn't become an animal. Devotee never perishes. सब लिख रहे हैं ना properly? Last, Bhagavad Gita 9.34. Bhagavad Gita 9.34, what does it say? Manmana bhavo madbhakto madhyaji mam namastro mam aveshasti atmanam bhatta. What does it say? Engage your mind in me, thinking of me, become my devotee, offer obeisances to me, worship me. Being completely absorbed in me, surely you will come to me, you will not become an animal. ये तीन successive श्लोकास बताते हैं कुछ seniors. 2.40, do not fear. 9.31, my devotee never perishes. And 9.34, what does it say? Give your mind to me. And you will come to me. So fifth, that is Kal, is also done. This is the complete chart of what? Five basic truths of Bhagavad Gita. It is based in paragraph number 12, 13 and 14 of it. यार अगर इंट्रोडक्शन ऑफ भगवद गीता इसी को लाइफ में उतार लिया ने तो सफल है जीवन. सिर्फ इंट्रोडक्शन. How many shlokas we have covered in introduction? This way, 1, 2, 3, 4, then 5, then 6, 7, 8, then ये कर्म अकर्म विक्रम कौन से श्लोका में था? फोर्थ में था. 4.20. ये लिखवाया था शायद लास्ट क्लास में. कौन सा श्लोक में? 4 point? Yes. So this complete concept of karma is in 4.7.
And inferior Prakriti is also called Apara Prakriti. And superior Prakriti, that is Jeev, is also called Para Prakriti. This is there in 7.5. Para Prakriti. Okay. I think sufficient dose है आज के लिए. Clear है बिल्कुल. ईश्वर, जीव, प्रकृति and its in charge, karma and kala. The 5 basic truths of Bhagavad Gita. No problem. Any questions? No. Okay, I'll take questions now. Yes. प्रभुजी, आपने जब थ्री मोड्स के बारे में बताया, तो आपने एक बार पहले बताया था कि इनके कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करके 83 टाइप्स बनते हैं. तो प्रभुजी 84 लाख तो स्पीशीज ही होती है, तो ये 83 में कैसे? 83 आपके एक दिन में 83 के 83 आ सकते हैं. अलग अलग कॉम में कभी गुस्सा चढ़ता है, कभी शांत होते हो, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है. यू अंडरस्टैंड? कोई भी हावी हो सकता है ना. कभी हम पे सतोगुण हावी हो जाता है, कभी रजोगुण हावी हो जाता है, कभी तमोगुण हावी हो जाता है. जब सतोगुण हावी होता है तो लगता है कि सब कुछ पढ़ लें. जब रजोगुण हावी होता है तो लगता है एकदम दुनिया में अंबानी बन जाए. जब तमोगुण हावी होता है तो लगता है सो जाए. जैसे टोपा जी कहते हैं कि जो 84 लाख स्पीशीज हैं, हर स्पीशी में एक अलग मोड है, अलग कॉम्बिनेशन. एक देखो, प्रीडोमिनेंट एक मोड तो हर एक में. जैसे ह्यूमन रेस में ज्यादा है पैशन. यू अंडरस्टैंड? बंदरों में अगर देखोगे तो इट इज इग्नोरेंस. दुनिया भर का सेक्स करते हैं. ठीक है. प्रीडोमिनेंट तो हर एक में. यू अंडरस्टैंड? एक तो है प्रीडोमिनेंट, बट स्टिल कॉम्बिनेशंस तो लाइफ लॉन्ग चलते हैं. प्रीडोमिनेंट मतलब ज्यादा हावी तो वही होगा. जैसे आपने बताया कि साउंड जो है वो इधर एज अ मीडियम में ट्रैवल करता है, तो स्काई, यू कैन से इधर स्काई, स्पेस, ओपन स्पेस. तो भी मतलब ऐसा भी कहते हैं कि साउंड इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मटेरियल क्रिएशन. ओम, ओम साउंड इज. तो भी इसको फिर मीडियम कैसे चाहिए ट्रैवल करने के लिए? मतलब ये तो इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करता है. यहाँ की बात थोड़ी, यहाँ की बात कर दो. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देयर इज नथिंग कॉल्ड ईथर. वहां पे मटेरियल नेचर की चीजें थोड़ी है. यू अंडरस्टैंड? मटेरियल नेचर की चीजें तो यहाँ है ना. सुपीरियर इंफीरियर प्रकृति कहाँ है? यहाँ है. स्पिरिचुअल स्काई में थोड़ी है. स्काई में ट्रैवल करती है. वहां का मैं नहीं पता. मैंने बताया ना, जीव गोस्वामी ने क्या बोला. 94% हमारे पास है ही डेटा. हमारे पास 6% डेटा है. तब उसमें जितना समझ आता है समझ लो. और व्यासदेव जी गीता लिखने के बावजूद भी अनसेटिस्फाइड थे. गीता व्यासदेव ने थोड़ी. नहीं, महाभारत व्यासदेव. तो ठीक है. बिकॉज एक कोई ऐसा ग्रंथ, ऐसा एक ग्रंथ कोई नहीं है जिसमें बिल्कुल ही सिर्फ कृष्ण भावना करता है. महाभारत में तो राजनीति भी है. वो तो स्वयं भगवान की वाणी है, भगवद गीता. प्रभु, आप बात नहीं समझ रहे. नारद पंचरात्र भी तो फिर भगवान की पूजा का ही सिस्टम है जो उसमें, हाँ, स्मृति शास्त्र में है. डीटी वर्शिप कैसे होता है वो सेटिस्फाई इसलिए नहीं हुए क्योंकि एक ग्रंथ प्योर नहीं दिया जो शुरू से एंड तक प्योर. ऐसे तो भगवत गीता था महाभारत में, बट एक कोई ऐसा एक स्पेसिफिक बुक नहीं दिया जो बिल्कुल ही प्योर. अब जैसे महाभारत तक कोई पढ़ेगा, बीच में भगवत गीता आएगी तो ऐसे ही निकाल देगा कि हाँ ठीक है चलो ये भी पढ़ लो. समझे? उसका ज्यादा इंटरेस्ट किसमें उठे? पागलों का इंटरेस्ट तो राजनीति में ही उठे. समझ आई बात नहीं? तो एक कोई ऐसा ग्रंथ ही नहीं था कि प्योर, जो बिल्कुल अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड. ठीक है, इसीलिए वो डिससेटिस्फाइड. जो शुरू से अंत तक भक्ति की बात कर. भागवतम में कुछ नहीं है एक्सेप्ट डिवोशन, प्योर डिवोशन, अनअलॉयड डिवोशन. 9.34 में कि एंगेज योर माइंड ऑलवेज
you will come to तो चार संप्रदायों में से किसी एक व्यक्ति शिक्षा या दान दियो तो वो तब भी बैक टू वर्ड Without guru, there cannot be gati. Person will be whimsical. तो हाथ में एक बास्केट में लड्डू गोपाल को लेके घूमता। वो लड्डू गोपाल को एक हमारे आते माता जी मंदिर में ना हाथ में से एक बास्केट लेकर रखती है। दो गोपाल होते हैं बड़े बड़े। क्या करती है? मैगी खा रही है, वो भी खिला रही है। हर वक्त तो मैं भगवान के बारे में सोच रही हूँ, तो भगवान के धाम तो जाऊंगी। ऐसे नहीं होता। यू कैन नॉट बी whimsical. ये सब सेंटिमेंटलिज्म होते हैं। When you approach a bona fide spiritual master, then you get to know what is emotion. प्रेम भाव सीधा नहीं आ सकता, पूरा क्रॉस करना पड़ेगा। आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, then अनर्थ निवृत्ति, then निष्ठा, then रुचि, then आसक्ति, then भाव, then प्रेम, लास्ट। अभी तो अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई, मैगी खाना। अगर माइंड एंगेज करे हमेशा भगवान के बारे में थिंकिंग करे तो तब भी वो प्रोसेस है ना। Without guru there cannot be gati. No, never. गुरु शिष्य पर, that means अगर आप गुरु नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब आपने अपना फॉल्स ईगो ही नहीं छोड़ा। आप सुपीरियर किसी को कब एक्सेप्ट करोगे? जब आप अपना ईगो छोड़ोगे तब ना। आप किसी को सुपीरियर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, इसका क्या मतलब है कि आप ईगो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो? उसी की वजह से तो यहाँ अंडरस्टैंड नहीं समझा नहीं तो मुझे उड़ाओ। मुझे उड़ा दो, साफ कर दो। ठीक। भगवान को साफ पसंद है। Mind is intelligence is above mind. अगर आप कंपेयर करो, श्रीमद् भागवतम कंपेयर करती है रथ को। रथ इज बॉडी, ऑलराइट। द सेंसेस आर द 5 horses. The mind is the rope. The intelligence is the chariot driver. तो रस्सी में और चैरियट ड्राइवर में जो फर्क है, वो फर्क है माइंड और इंटेलिजेंस में। हमारी जो सेंसेस है, मुंह को क्या मन करेगा बढ़िया बढ़िया खाऊं, आंखों को क्या मन करेगा हर प्रकार का गंध देखूं, ठीक करेगा ना। तो अगर पीछे से चैरियट ड्राइवर नहीं बैठा कंट्रोल करने के लिए, किसको? रोप को। रोप को, रोप यानी माइंड। रोप लगाम लगाती है सेंसेस के ऊपर, अगर इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो। पर अगर इंटेलिजेंस कमजोर हो तो वो रोप जो है, वो जिस डायरेक्शन में सेंसर्स भाग रहे हैं भागने देते, समझे? तो रोप जो है उस चैरियट का, वो माइंड है, और जो उसका सारथी है वो क्या है? इंटेलिजेंस। तो हमें किसको स्ट्रॉन्ग करना? कभी कभी हम माइंड को, अगर रोप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दोगे और इंटेलिजेंस को कमजोर रखोगे, तो जो ये सारथी है, रोप मोटे मोटे हो गए, वो कंट्रोल कर पाएगा रोप्स को? नहीं कर पाएगा। किसको स्ट्रॉन्ग करना? इंटेलिजेंस। किसको कमजोर करना? माइंड को। समझे? अगर हमारे उसमें सोचो, प्रैक्टिकल रेलेवेंस पे सोचो, मन इज माइंड। हिंदी में अगर देखो तो मन, अगर मेरा ये मन कर रहा है, मेरा मुंह मन कर रहा है, क्या वो मन इंटेलिजेंस से दबने को तैयार है? बुद्धि। मन से ऊपर क्या है? बुद्धि। समझेगा? मेरा मन कर रहा है अभी जाऊं थिएटर में, रात को 2 बजे तक मूवी देखो, तो मेरा माइंड है। पर मेरा इंटेलिजेंस क्या कहेगा? नहीं नहीं, टाइम पर सो जाओ, सुबह मंगल आरती करो। तो अब दोनों में से लड़ाई होती है, कौन जीतेगा? माइंड जीतेगा या इंटेलिजेंस? यू अंडरस्टैंड? अगर माइंड जीत गया
तो सोल हार जाएगी, और अगर इंटेलिजेंस जीत गया तो सोल जीत जाएगी। डू आई मेक सेंस? एनी अदर? प्रभु जी, आपने जैसे बताया तो बड़े सारे श्लोकास भी कोट करे कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। तो जैसे हम हमारे जैसे इस्कॉन टेम्पल में बात की है, तो हम कई बार हो जाते हैं कि डेमिगॉड्स बहुत छोटे होते हैं, नो नो नो, बहुत पार्शली बिहेव करते हैं उनके साथ। तो फिर क्या you should pay respect to demigods. They are superior to us. They are pure devotees. अब कभी भी सीनियर डिवोटीज को देखो मंदिर में आएंगे, वो 9 के 9 ऑल्टर्स में प्रणाम करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि गॉड नेता ऑल्टर से वापस घूम लिए। वो 9 के 9 ऑल्टर्स में प्रणाम। हाँ, गलत क्या है? जाकर मांगना, वो नहीं करना। भक्ति मांगो। गोपियों ने भी पूजा करी थी, पर बदले में मांगा क्या था? कृष्णा कृष्णा मांगो। रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए, ये गलत है। देवी डेमिगॉड्स को ऐसे समझ रहे हैं तुच्छ है, ये तो अरे वो तुच्छ नहीं, तुम तुच्छ हो पागलो, तुम तुच्छ हो। तुम्हारा दिमाग ये चलता है कि बस ये तो मांगने के लिए है। तुम ये नहीं सोचते कि वो प्योर डिवोटीज भी तो है। नहीं समझ आई बात? हम्म। मुझे पिछले भी पूछा गया क्वेश्चन कि अभी ये पढ़ा कि डिवोटी को ईश्वर कंट्रोल करते हैं और वही ईश्वर दुर्गा को भी कंट्रोल करते हैं। तो दुर्गा को कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि डिवोटी को तो दिखता है कि हम कंट्रोल दुर्गा को क्यों? क्योंकि दुर्गा नॉन डिवोटी को भी कंट्रोल कर रही है। उनकी वो सेवा है इसकी दुर्गा की, नॉन डिवोटी को कंट्रोल करने की। वैसे ईश्वर कैसे दुर्गा को कंट्रोल करें? मतलब क्या बोलना है? अरे शी इज वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ ईश्वर। तो फिर एग्जैक्टली तो ईश्वर की नॉन डिवोटी को कंट्रोल करें। यस, वो बोला है कि जीव डिवोटी, जीव 2 तरह के होते हैं। जीव 2 तरह के होते हैं, डिवोटी, नॉन डिवोटी। डिवोटी के केस में ईश्वर डायरेक्ट कंट्रोल है, और नॉन डिवोटी के केस में ईश्वर थ्रू दुर्गा कंट्रोल लेते हैं। भक्ति नहीं देते, जो उसको एंजॉय करना वो करने के लिए उसको रिसोर्सेस देते, मटेरियल नेचर के। अंडरस्टैंड? तो आज जो भी अगर कोई अल्टीमेटली ईश्वर मींस कंट्रोलर, whether directly or indirectly, नॉन डिवोटीज इनडायरेक्ट। एनी अदर क्वेश्चन? ऑनलाइन में से किसी को कुछ पूछना है या क्लोज करें? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि अगर इंटेलिजेंस जीतता है तो सोल जीत जाती है, लेकिन फॉल्स ईगो के कारण तो इंटेलिजेंस भी बिल्डर हो रखी है। तो इन केस अगर इंटेलिजेंस जीत भी गई तो अब तब भी हार ही है सोल की। फॉल्स ईगो के कारण इंटेलिजेंस पे बिल्डर है, मतलब फॉल्स ईगो के कारण तो हम खुद कुछ बोल। इंटेलिजेंस तो फॉल्स ईगो को खत्म करती है, रियल ईगो को एस्टैब्लिश करती है। व्हाट इज रियल ईगो? दैट आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण। इंटेलिजेंस तो दोनों पे हावी होती है, माइंड पे भी और फॉल्स ईगो पे भी। अगर वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, और जो मटेरियल इंटेलिजेंस है वो माइंड को भी प्रोपोगेट करती है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। जो मटेरियल इंटेलिजेंस है माइंड को भी प्रोपोगेट करती है, किस चीज के लिए? सेंस एंजॉयमेंट के लिए। और फॉल्स ईगो को भी इंक्रीज करती है कि देखो मैं कितनी बड़ी उपाधि पर। बट जो प्योर इंटेलिजेंस है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, वो माइंड को भी दबाती है और फॉल्स ईगो को रियल ईगो में कन्वर्ट करती है। रियल ईगो इज आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण। इंटेलिजेंस इज अबव द टू थिंग्स, नॉट बिलो। ये डाउट था यू प्रभु जी। अंडरस्टैंड? क्लियर है? मेरे को यही लग रहा था कि ईगो अबव है इंटेलिजेंस की। नहीं, इंटेलिजेंस इज
supreme among the three. All right. Hare Krishna. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की कल प्लीज कोई यूथ प्रोग्राम कोई ना मिस करें 12 noon everyone should be there जो लोग सुबह आ सकते हो और भी अच्छे शुभ भागवतम क्लास में and then then गीता मैराथन अच्छा 11 बजे कल प्रसाद का क्या किया सुबह वाले में बन जाएगा हरे कृष्ण कल 11 o'clock है यूथ प्रोग्राम श्लोक देखिए